So let's go through the question once. Okay. Is the question visible? Okay. A building is on fire. There are fire engines, firefighters, residents who have rushed out, a crowd that has gathered to watch and help and to help, etc. Within this chaos, there could be many hidden stories. Unravel one of these by creating a character and his or her situation through the use of images and sound. No dialogue are allowed. Okay. So just give me a second. So let's begin now, Durgeshwari. Are you there? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Durgeshwari. So Should I start? Let's start reading. Okay. Rupa, an 8-month pregnant woman, arranges the papers on the study table. She keeps all the papers in the files and closes the laptop and keeps everything in the bag. She then wraps all her clothes and stuffs them into the suitcase. Dev, her husband, who has come to know some time back that the baby Rupa is carrying is not his, sits quietly on the sofa listening to Desert Rose. He closes his eyes and rests his head on the sofa. His face is towards the ceiling and he has spread his arms on the sofa. A tear rolls down his eyes. Rupa bends down to remove her footwear from under the bed. Just then she hears some sounds of glass breaking. She goes to the kitchen to check if any glass has broken, but in vain. She smells a foul burning smell but is unable to find out what smell it is. With the smell increasing, she starts to panic. She wants to talk with Dev but gathers no courage to do so. She then hears sounds of sirens and people shouting for help. She quickly goes to the balcony only to find that the building is on fire. She starts panicking more and informs about the situation. Dev simply looks at her without uttering a word. The fumes in the building start increasing and a cloud of smoke gathers in her apartment. Rupa feels choked not because of the smoke but because of Dev's silence. Rupa begins to cough and opens all the windows of her apartment. She opens the door to go out but sees that the corridor is in flames. She asks Dev to help her out, but in vain. She then collapses. Looking at her collapse, something inside Dev breaks and he shouts on top of his voice. His scream can be heard till the ground floor. All the people look at their flat and realize that a pregnant woman stays with her husband in that apartment. The society people request the firemen to save the two. The firemen pull out a big ladder and place it towards the balcony. A fireman climbs up the ladder. In the meantime, Dev fetches water and sprinkles it on Rupa's face. Rupa gains some consciousness and Dev offers her water. Dev sees that a fireman has come to their rescue, so he lifts up Rupa in his arms and takes her to the fireman. Dev feels the heat increasing under his feet. He bears it all and safely hands over Rupa to the fireman. He is unable to bear the heat under his feet, but he waits at the balcony to see if Rupa has reached the ambulance. Rupa is attended by a doctor. She sees up if anyone is going to help Dev, only to find that the portion of the balcony on which Dev was standing falls with a big thud on the flames underneath. She tries to get up, but the hospital staff does not allow her. She sees Dev engulfed in fire. All other people cry out for help. Okay. Okay. So, okay, let me ask you, how do you assess yourself in this write-up? I don't know, sir. Well, it's a very nice write-up, I would say, but doesn't really qualify with what the question had asked. You know, the question demanded that there should be no dialogue. Technically, you're right when you say she informs about the situation, and she asks Dev to help her out, but in vain. Right? So yes. Technically, it's a monologue, but that's okay. But no, my point is something else. All this is okay. I mean, like, I don't have any issues with thoda bahut if you have used a couple of lines here and there. Okay.
It's a nice, interesting, it's a very interesting situation you have created. But let's say, how could you have actually been perfect, you know? Yes, sir. Maybe what if she saw the smoke in the kitchen and she collapsed right there itself? Okay. Instead of coming out and trying to seek help from Dave and then collapsing? What if she had collapsed there? Right. And Dave, hearing some sound in the kitchen, rushed and perhaps only to see that she's unconscious and that there's smoke all around. Okay, so then the drama could have been very interesting without losing out on what the essence of your story is. At the same time, you would have qualified for the fact that, okay, no dialogues were used, come what may. You see? Okay. The moment you're saying that, you know, she informs about the situation, right? Right. And the moment you say that she asks Dave to help her out, but in vain. No, how could you have avoided these moments is what I'm trying to Yes, figure sir. out. So if that was, if agar wo kar li hoti thi, to it would have been a very nice write-up otherwise. Very nice. The moment you say Rupa, an 8-month pregnant woman, you know. So the moment one reads the very first line, वो कैसा भी स्ट्रेस वाले माहौल में हो, उसको कितने भी पेपर्स करेक्ट करने हो, वो immediately he will get glued on to your writer. Because emotionally one immediately gets connected to a vulnerable situation like these, you know. Yes. 8-month-old pregnant, you know, in a building on fire. So, and then one has to that curiosity to see what is going to happen now, what is going to, how is this drama going to unfold, and how what is the resolution maybe towards the end. Okay. So all of this is very nice, except that, okay, so you have to be careful if you could write this, how or why could you not have written or tried to avoid those very few bare minimal couple of lines that you have tried to, insert? Yes, Because sir, yes. the question strictly says no dialogues are allowed. Right, Now, sir. technically, dialogue is when it is spoken with a conversation between two people. Okay? Yes, sir. So even if, let's say, you're saying she's trying to say something while Dave is non-responsive, so it's a monologue anyways. But no, but वो सब मेरे ही पूछते हैं. So the idea is you can still be smart enough to, you know, avoid that. Okay, I'll keep that in mind, sir. Yes, sir. But it's a nice, very nice situation you have created. Okay. I think you should develop this further, and FTA or no FTA, try and, you know, write it up, make it a short story or a short film kind of a thing. Okay. Nice, interesting stuff you have created. It has a lot of emotional elements there, you know. Yes, sir. Thank you, sir. But the end is a little too dramatic. So ठीक है. Anyways, so yeah, nice. And I don't know what is the length of the write-up that they have asked for? 400 words. Mine's is little 430 or something. Right. Okay. Thank you, sir. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, but nice one, nice, good job. Thank you, sir. Ashar, are you there? Yes, sir. So let's begin. The sound of, shall I start? Yeah. The sound of sirens of the fire engines and the loud crying of people was heard by a truck driver. He stops his truck and gets down. He follows the sound of the siren and sees a 6-story building burning. Firefighters were spraying water on the building and people were crying in distress. An explosion happens, a loud boom is heard, and a huge wave of fire comes out of a window from the 4th floor. Kamal, a 34-year-old truck driver, could see people are in panic and searching for their kids and partners.
He could hear a man standing near the firefighters asking them if they had seen his wife. Karan goes to the man and asks him about the incident and requests him to show him if there is any entrance from where he can enter and find his wife. They go towards the parking and the man shows him the stairs which were near the guard's room that goes straight into the building. Karan tells the man to come with him, but he notices the fear in his eyes and enters the building alone. He goes on the first floor. He could see the huge flames of fire and the loud crackling of burning doors instilled a sense of fear in his heart. He could hear his heartbeats and could see nothing but flames all around. He stood frozen. He could not move. The firefighters standing on the fire engine saw him and sprayed water towards him. The splash of water brought him back to his senses. He could hear a soft cry of a woman and asks, "Where is she?" A breaking voice says that she is on the second floor. Another explosion takes place. A loud and huge wave of fire comes and hits Karan. He fell on the ground and could not feel anything. He could only hear a continuous beep which gradually decreased. The firefighters got little control of the fire, and the lady on the second floor came down and saw Karan lying on ground. She goes and shakes him. He opens his eyes and sees a familiar face which he could not recall. He then feels a tight grip on his legs, and the lady drags him towards the stairs that goes down in the parking. He feels a strong pain and hears loud thud as he is being dragged down the stairs. The firefighters came and picked him. He could see a fading figure of a woman who saved him as he closes his eyes, getting inside the ambulance. Okay. पहला तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि there is a situation of dialogue, right? People are talking. So it doesn't really qualify, in the scheme of things. Sir, so we can't use indirect dialogue also, no? We have to avoid both direct and indirect dialogue. So बहुत basic सी चीज पूछेंगे ना. Let me ask you. For example, have you seen Charlie Chaplin films? Yes. Oh, yeah, many of those silent films, right? So now, can you understand what happens there more, without even using a line or two, without using any sound, without any dialogue? They can still create. He could still create in most of his films, the silent era films I'm talking about, situations. So the question is talking about situations, creating a situation, or describing a situation that has happened in this setup, in this scenario, in this milieu, right? Milieu क्या है भाई कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और बिल्डिंग में आग लग गई है, और वहां पे तुमको ये बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है. अब इसमें तुमको एक कुछ ऐसा मोमेंट फिगर आउट करना, फाइंड करना, जहाँ पे कि without even uttering a dialogue, you can still catch the attention of the reader, right? Like इससे पहले वाले स्टोरी में अगर हम देखें तो अगर वो लड़की बेहोश हो जाती पहले ही, तो सडनली देयर वाज नो डायलॉग का कोई सिचुएशन, कोई पॉइंट ही नहीं होता ना. वो एक बेहोश लड़की से वो क्या ही बात करता, वो तो और इस स्ट्रेस में कि भैया इसको बचाना है, आग लगी है, तो दिमाग तो दूसरे से रिएक्ट करता और निकलने की कोशिश करता और फिगर आउट करता चीजों को, उसमें फोकस होता. तो माइक्रोज में चले जाते हैं कि वो शायद पहले दरवाजा खोलता, फिर देखता वहां से धुआं आ रहा है, लेकिन वहां से भागता, फिर कहीं और जाता, वहां से दिखता धुआं आ रहा है, वहां से भागता, ऐसे करते और वो करते और ऐसा होता वैसा होता, फिर फाइनली वो देखता कि फायरमैन आ गया, और जैसे ही फायरमैन को देखता वो भी खुद बेहोश हो जाता, मान लो ऐसा कुछ. तो you have created all the interest, you have created a beautiful space, a beautiful situation in that space, and you could retain the interest of the reader for the next for those 5 minutes over there, right? So that was what is needed.
Now, the moment you introduce a character and then he's trying to figure out कि अच्छा क्या हो गया, किसी को दो देखा, and वो ऊपर गया और फिर वहां जाके फिर पूछता है कि क्या हो गया, कहाँ है, 2 सेकंड मतलब तो तुम तो एक नॉर्मल राइटअप लिख रहे हो ना, then it doesn't really qualify for the question. The question is कि I mean, there could be unravel all these stories by creating a character and his or her situation through use of sound and images, no doubt about it. And technically, one character is what they are asking for. Right? So you can have several characters, but your character, your protagonist, your hero has to be that one guy. Jiski kahani hai. It's the question, right? So otherwise, so this is a very regular, normal story that you have written, you know, that can be made into. So it doesn't really qualify. Now the second problem, even if let's say you've done this, and if let's say if I was the examiner, I would have given you like 10 में से I would have given you 5. ठीक है. तो वो 5 भी जो है वो भी अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आया. वो कमल उतरता है ट्रक से, जाता है, पता करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के देखता है कि वो फायर दिखता है, वो भौचक्का खड़ा हो जाता है और वो बचाने गया था और अब उसको खुद ही लोग बचा के लेके आ गए. तो पहली बात तो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, मतलब क्यों, तो वो घुसा ही क्यों, अगर वो उसको तुमको ऐसे ही ट्रीट करना था तो why did you send him to the fire, inside the fire? सर मैंने ऐसा क्रिएट किया कि वो बचाने गया और खुद वो परेशानी में पड़ गया, जिसे बचाने गया उसी ने उसे बचाया. ऐसा होता है. हाँ, जिसने बचाने गया उसने बचाया वाला जो मामला है वो भी टेक्निकली जो इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन. मेरे बिल्डिंग में एक बार लग चुकी है यार, बहुत पहले के पास आता है. मुझे पता क्या होता है, तुम आग कहीं और लगी होती है लेकिन पूरी बिल्डिंग खाली करवा देते हैं. ठीक है, तो तुम तो पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है. फिर कोई भी बिल्डिंग में रेसिडेंट जो है ना, वो उसको इट इज लाइक अ कर्फ्यू काइंड ऑफ सिचुएशन. नो, यू आर नॉट अलाउड इनसाइड, कम वॉट में वो बाय ऑर्डर आता है, तुम अंदर जा ही नहीं सकते हो. ठीक है, पहली बात. चलो ये तो घुस गया, चलो फिल्मी एक सिचुएशन है, सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर के तुमने घुसा भी दिया. बट जब घुसा भी दिए, फिर जब लौट उतरता है, अगर वो लड़की खुद निकल के आ गई तो फिर वो क्यों चिल्ला रही थी, वो तो खुद ही केपेबल थी आने की. तो वो खुद निकल के जब आ गई, वो डरी हुई होगी. समझने की बात है कि उस मानसिकता, उस मानसिक सिचुएशन में वो तो भाग के आई, उसको नहीं दिखेगा वहां पर कौन है कौन नहीं है, और उसको बचाएगा शायद कोई फायरमैन ही, कोई है ना. तो थोड़ा सा ज्यादा तुमने लिबर्टी ले लिया, मतलब कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया कि ये वो लड़की बचा के लेके आ गई. इट डजंट रियली, मतलब उतना इंटरेस्टिंग या उतना एक्साइटिंग कुछ निकल के नहीं आया. व्हाट इफ लेट्स से, या अगर तुम्हारी ये बात है कि वो लड़की ही उसको बचा के लेके आती, तो थोड़ा और ड्रामा क्रिएट करना चाहिए था. थोड़ा उसको, मे बी वो कमल उसको बचाने जाता और बचाने के उसमें भौचक्का खड़ा नहीं हो जाता, वो घुस जाता और वो तोड़ देता दरवाजा और जल भी जाता मे बी उसमें, और फिर वो उसको पकड़ भी लेता, पकड़ के आग से निकाल के ले भी आता, लेकिन इतना जल चुका होता था कि वो खुद गिर गया. सेफ्टी पॉइंट पे आने के बाद वो गिर गया और उसके बाद वो लड़की उसको उठा के लेके गई. अगर ऐसा कुछ होता तो फिर भी इंटरेस्टिंग सा कुछ निकलता, समझ रहे. अभी तो वो फिर घुसा ही क्यों, अगर वो उसको जाकर के ऐसे स्टंट हो जाता तो क्यों कलाकारी करेंगे वो फीलिंग कोई वाली आ रही. व्हाई द हेल did he at all, you know, or why did you make him enter? Or if you have made him enter now that तो फिर उसको let him go and, you know, try and fight. Let him fight and let him almost become victorious, but then he collapses, and then the very girl who has been rescued, then takes him down. Then it would have been a very interesting, very nail-biting kind of अब क्या होगा वाला situation. And even in this, he could have avoided these dialogues. मतलब Kamal could have just heard somebody shouting, "अरे मेरी बीवी या मेरी बहन, अरे मेरी बहन." And उसने पूछा कि वो, अरे कोई और, अरे मेरी बहन, उसमें खिड़की देखा, उसको समझ में आ गया, वो फ्लोर में वो पहुंच गया. You know? तो थोड़ा स्मार्ट रहना, बेसिकली देखो सवाल को समझना जरूरी है. FTI
का सवाल है ना, मतलब हल्के में मत लो पहली बात, है ना। जो लिखते हैं, जो डिजाइन करते हैं, वो धुरंधर लोग बैठे हैं जो ये सवाल बनाते हैं। उनको पता है कि कब कहाँ कौन कितने ट्रैप में फंसने वाला है, यहाँ पे लोग फंसेंगे फंसे। और इसी ट्रैप में ना एक कोई होगा जो कि निकल जाएगा, बड़ा स्मार्टली वो खेल करके ना वो निकल जाएगा, और वो बंदा को क्वालिफाई हो जाएगा। तो तुमको ये ट्रैप्स को समझने होंगे कि ये सवाल में ट्रैप क्या है। वो ऐसे ही नहीं लिख दिया, बस लिख दिया, है ना, ऐसा नहीं होता। तो सो बाकी तो ठीक है, नॉट वेरी एक्साइटिंग, बट ये थोड़ा और सोचो, मैं कहता हूं थोड़ा और प्रैक्टिस कर, मतलब आई थिंक जितना तुम्हारी स्टोरी में, देखो सिंपल सी बात है, तुम टेक्निकली अगर मान लो एकदम करेक्ट नहीं भी हो ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे एक दो लाइन आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलता, तो तुमको 10 में 10 तो खैर नहीं मिलेंगे, 10 में 7 मिल सकते हैं, फिर भी 10 में 6 फिर भी मिल सकता है, इवन इफ यू आर टेक्निकली नॉट करेक्ट, यू नो। बट वो कब होगा जब तुम्हारी कहानी सही में इंटरेस्टिंग होगी, वाकई में इंटरेस्टिंग कहानी निकल के आएगी। तो तुम्हारा बस एक ही तुम्हारा परस्यूट होना चाहिए कि भैया व्हाटएवर आई एम राइटिंग शुड टर्न आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग राइटर। somehow it should, इंटरेस्टिंग का मतलब ये मजेदार, मतलब बहुत मजा आ रहा, वो नहीं, कोई जरूरत नहीं। इंटरेस्टिंग something which is gripping, something which has actually caught me inside and kept me alive for throughout the week. अगर वो हो रहा है तो फिर you will still manage to get some marks, even if it is technically not perfect, you know. Then you will, but then अगर वो नहीं हो रहा है, then there's a problem, then and एक मार्क, एक नंबर जो है that might end up being a little एंड में बहुत वही खेला हो जाता है। ओके, सो और कुछ सवाल है तुमको? नो सर। ठीक है, ठीक है, प्रशांत। Yes, sir. Yeah, let's begin. Alok, 45 and extremely skinny, is sitting on his bed, looking at his laptop. His eyes are half open. The sound of porn can be heard from Alok's laptop. He has tucked his hand inside his pants when he hears footsteps of people running outside his door in the hallway. He does not move. He continues masturbating. Alok's room is tiny and messy. Alok finishes and walks up to his washroom. He comes back to his bed, opens his cupboard and takes out a syringe filled with liquid and a needle. He takes out a piece of cloth, ties it around his arm and holds it with his mouth to tighten the grip. Suddenly he hears multiple people running along the hallway and banging at his door. He drops his equipment and goes to the door. The hallway is filled with smoke and Alok starts coughing. The doors are all open with sheets and water spilling out of the rooms. A man runs past Alok holding a child in his arms. Alok sees this and decides to go inside his room and shuts it. The smoke has now entered his room. He goes to his bed and ties his arm again. He injects his forearm nerve and falls back on his bed. The fire ambulance siren is roaring outside Alok. Running outside, but Alok still lays on his bed. He takes his phone out and looks at his photo of him, a woman, and a child in the arms of the woman. A family picture. He flicks his phone on the ground and starts crying. He starts coughing after a while and becomes unconscious. Alok suddenly is awake and aware. He looks around, but the lights are too bright. The firefighter's face carrying him is blurred. His vision is weak. As he is about to enter the ambulance, he sees his wife and his child in the same position as the picture he had. She smiles at him and the child waves at Alok. Okay. Now this is very interesting, very nice, something you've written, Prashant, but it's a little too short. It is, I don't know, halfway maybe. 330 words. 330 words, yeah? That's Okay. I didn't expand on it. You should have expanded more on the, because you know what the interesting thing that you have done is, without even uttering a word,
you have created that situation that we are looking for, you know. Hmm. And a very interesting situation. कि अब क्या होगा? Like when it starts with the Alok masturbating, Yes. the first thoughts is कि, so immediately I'm into the read because, oh, is he going to finish his masturbation and then rush out, or you know, what is the final, is the tussle between what happens first? That is the kind of, you know, and then immediately I'm glued on to the story. Okay. Hmm. So that's very interesting. But then later on, what happens suddenly is a total flip and then creates a problem. Hmm. Suggesting that, or so to say, Alok finishes and walks up to the washroom. He comes back to his bed, opens his cupboard, takes out a syringe filled with liquid and needle. तो ये suddenly ये क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा. Is No, he? I think he was not aware of what's happening outside. नहीं He was already. तो वो क्या सुसाइड कर रहा था या ड्रग ले रहा था क्या? No, he was taking a drug. ओह अच्छा. Uh, ओके. तो नाउ इसमें फिर इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं फिर. तो उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड नीचे कैसे पहुंच गया? no, sir, I didn't probably explain it. Child and his wife and his child is like what he's imagining because he's drugged, no? ओह So ओह it's like it's happening in its mind. That's why it's like they're in the same position as the picture. I see. I wanted to write. They're Then standing in. There's one crowd. The crowd is all horrified, but the wife and child are happy and they're waving at him. That yes. would have And you explained could- it. That he's imagining. Yes, and you should have been a little more you know, explicit here that I thought it'll. If I don't say much, then it'll be better there. देखो once again ये जो task है ना, this particular exam for which we are all meeting together right now, so this is a very unique exam where you have to understand the psyche of the examiner also, right? Hmm. To understand, it's not you're not expect, or you better not create a masterpiece, you know, but which doesn't serve the purpose of of not Question. not confusing the examiner. The moment it is a little confusing or it is a little, you know, dubious or something, something happened, I missed it. But then so you better be to be on the safe side. I would suggest to be you know, to explain कर दो एक दो line, spoon feed कर दो करना है तो, but be on the safer side and, you know, sail through. Yes. Than kind of pushing the examiner to maybe go back again and, you know, read a couple of lines, thinking I may have missed something here. वो वाला फीलिंग मत लाएं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मुद्दा ही है कि तुम एग्जाम क्वालिफाई करना. तो मास्टरपीस ये अच्छा है, अगर मैं इत्मीनान से पढ़ूंगा तो मेरे पास काफी समय है पढ़ने के लिए, और फिर इमेजिन कर रहा हूँ विजुअल्स को और मेरे को शायद इस पे फिल्म बनानी है, तो मुझे लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है. लेकिन यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है. यहाँ पे मुद्दा है कि भैया पढ़ो, नंबर दो, नेक्स्ट को पढ़ो, नंबर दो, नेक्स्ट, है ना. मेरे लिए वो चैलेंज है. So don't confuse me. Don't keep any element of even an iota of confusion in my head. You know, for which you may have to sacrifice your masterpiece. Do it. It doesn't matter. So if you have to maybe add a line or two which explains and kills the very essence, maybe, you know, do it. But round it off, kind of clear. Don't make it ambiguous. Clarify. Just to be safe. Just to be safe, just to make the reader feel, oh yeah, I got the story, a nice story, you know, just to make him feel that way. Okay. No. So and so now I have a question. How much time did you take to write this or to conceive this and then write? Did you time yourself or? Yes, within 20 minutes, 25 minutes, I think. Around 20-25 minutes. Okay, so 20-25 minutes, yeah. Okay, you'll have to be faster then, because your examination you will not get 20-minute test space, you know. You probably will get not more than 12-15 minutes for a story like this.
Yes, sir. I looked at the question, then I took enough time, then aram se, slowly I wrote it I like get that. it. I get it. But you have to practice in a way where you create something interesting, something really good, keeping all the requirements of the question in mind. But at the same time, you have to be fast enough to round it off, finish it off by between 12 to 15 minutes. Okay. Just be mindful of that. You know? Yes. Fine. बाकी तो अच्छा है. This is nice. It's really nice. So for Ashar and Durgeshwari, now you see, and for others also, he has actually not used any situation where there's a moment of dialogue, you know, and still he has managed to create that equation. So it helps because he's So alone also. it has, There's yeah. no one to talk to. So वही है ना, तो तुम्हारा क्लू उसमें ही है, क्वेश्चन में ही तुम्हारा क्लू है कि वन कैरेक्टर है जिसको तुम फॉलो करना है, और वो अकेला कैरेक्टर है. वो अकेले कैरेक्टर के साथ तुम बहुत हजारों चीजें कर सकते हो ना. Yes. तुमको उन हजारों में से कोई एक मोमेंट निकाल करके उसके साथ खेल लेना है. तो ये दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द स्टोरी और थिंक अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, यू नो, these questions are very interesting and very important questions. If you take them like a regular question, तो the examiner knows, अच्छा ये फंस गया ट्रैप में, इसने इसको ordinary question समझ करके लिख दिया, गए तेरे 3-4 नंबर. Be very careful. And also see to it that if it is asked for 400 words, be around 380 to 410, you know, 385, 380 is to 390 to 410 के आसपास खींच दो, you know, somehow. ठीक है, let's move on to the next one. Thank you. Yeah, okay. Abhironi. Yes, sir. Shall I start, sir? तुम्हारा भी तो छोटा सा ही है अभी, मतलब 400 वर्ड्स के आसपास क्यों नहीं तुम लोग करते हो? No, sir. Okay, let's begin. It's 6 a.m. A woman 35 years old and her daughter 6-year-old working in the kitchen on 3rd floor. Woman puts pot on the gas and lit the lighter. Suddenly cylinder blasts and woman and her daughter turns into ashes. Anup and his family wake up after cylinder blasts. Anup goes to balcony and sees 10 buildings are burning downstairs. He races to their family and finds a blanket from almari. People who are standing outside, they call instantly fire brigade and ambulance. Later, firefighters, engineers, and ambulance arrive there with siren. Firefighters go inside, and few of them tries to extinguish fire from the water. People are gathered at the ground floor and talking about fire and burned people. Few of them carry burned people to ambulance. Anup comes with his family with the help of fire extinguisher, but soon fire extinguisher gets empty. Anup hears sound of fire and shouting people of those who got burned. Anup gradually goes ahead and clears the way. Fire comes and he sits down and his back catches fire. But he stands up, he takes his family and go ahead. He does like this 5 times. Finally, firefighters arrive to them, but till then Anup is almost dead while defending his family. Firefighters go upstairs to save the people. Anup and his family are carried downstairs by firefighters to ambulance. Ambulance goes to hospital. Ambulance blows horn, but there is traffic. Arya cries. She requests to driver to do fast. Driver gets down from the car. He says to people to give him pass and he gets. He drives car fastly. Arya is weeping. Anup is almost dead. His whole body is burned. They reach to hospital. Anup is carried to emergency room. Doctors come to emergency room. Room is locked. Doctor start treatment. Later,
Doctor comes outside. Arya and her son and relatives are outside. Arya goes to doctor and asks about Anup. Doctor tells her that his whole body has burnt. We have done few surgeries and few are rest, and he's safe now. Arya takes a deep breath. हेलो Yes, sir. It's done. नहीं नहीं मेरा बीच में एक 10 सेकंड के लिए शायद गया था कनेक्शन, या पता नहीं तुम्हारा गया था, समझ नहीं आया। ये लास्ट लाइन फिर से पढ़ रहा है, ठीक है। Anup carries to Anup is carried to emergency room. Doctors come to emergency room. Room is locked. Doctors start treatment. Later, doctor comes outside. Arya and her son and relative are outside. Arya goes to doctor and asks about Anup. Doctor tells her that his whole body was burned. We have done few surgery and few rest, and he is safe now. Arya takes a deep breath. अभी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन, बहुत सारा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अभी पहला प्रॉब्लम तो ये है तुम्हारा, जो शायद मैंने कल भी तुमको बोला था क्या, कि अगर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में कंट्रोल नहीं है, Yes, yeah. तो डोंट यूज दैट लैंग्वेज, Yes, sir. इट विल नेवर हेल्प यू, है ना। इस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज हियर द आइडिया इज टू कन्वे, राइट, कन्वे keeping your best capabilities in mind. The second thing, even then, you know, even if let's say we keep aside the language ka issue. Yeah. Sir, आवाज नहीं आ रही. So it's a very strange opening of a story. Wait. Yeah. Am I there right now? Can you? Yeah, yes, sir. Yes, sir. सुनाई दे रहा है. Okay. So ये वुमन और बच्ची से तुम कहानी शुरू करते हो और वो शुरू होते ही वो मर जाती है. मतलब होता है, दिखता है कि सडनली उसके सामने वाले बिल्डिंग में से विस्फोट होता है और he sees a woman and young girl in fire and then he rushes. ऐसा कुछ हो सकता था ना? Why should you begin from a woman who has no role to play in this world? You know? उसके बाद भी क्या होता है, अनूप अपने फैमिली को, पूरी फिल्म में तुम्हारे क्या हो रहा है, अनूप अपने फैमिली को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, 4-5 बार ऊपर नीचे करता है, और फिर उसको खुद आ जाती है और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, मरते मरते फिर बच जाता है. ये है ना कहानी. yes, अब इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, मतलब कहानियां पढ़ते हो, मतलब पढ़े ही होगे ना, मतलब हाँ थोड़ी बहुत पढ़ी है लेकिन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना. क्योंकि वो ये समझना होगा, देखो कोई भी फिल्म जो होती है, कोई भी हम स्टोरी लिख रहे होते हैं ना, वो एक इंसान के लाइफ की स्टोरी होती है, जिसमें के उस लाइफ से जो बोरिंग पार्ट्स है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है और सिर्फ जो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स रहते हैं उसको एक साथ करके वो स्टोरी बना करके फिल्म में बना करके दिखाई जाती है. ठीक है, तो ये इवेंट अपने आप में तो बहुत एक मतलब आइकॉनिक इवेंट होगा उसके लाइफ में, उसके मेमोरेबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उस इवेंट में के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो बहुत ही जेनरिक घटना है. हर कोई अनूप नहीं होकर के वो अरूप होता, वो भी वही करता, अपनी फैमिली को बचाता और फिर शायद उसमें जल जाता और शायद बच जाता या फिर शायद नहीं भी बच पाता. ठीक है, कोई भी होता वही करता. इंटरेस्टिंग तुम्हारी कहानी तब बनती जब अनूप बचाने जाता लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और फिर वो खुद ही भाग जाता.
और कोई और जाकर के उसकी फैमिली को बचाता, तब वो इंटरेस्टिंग बन जाती कि अरे ये कैसा कैरेक्टर है, अच्छा ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि नहीं कर पाया, जो रियल है, शायद जो रियलिटी में शायद सीख, तब तुम कहानी तुम्हारी इंटरेस्टिंग बनती है ना। तुम्हारी कहानी में अभी कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ जिसको कि मैं देख करके बोलो अरे क्या कहानी है ना। तो तुम्हारा काम, तुम्हारा मुद्दा ही ये है कि यू हैव टू टेक सम टाइम एंड कम अप विद समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर। इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, जब तुमने सिर्फ पन्ने को भर दिया है, एक सिचुएशन को मेमोराइज, कोई गलत नहीं, तुमने यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट तुम्हारा कहानी उतना मजेदार नहीं है, इतना ग्रिपिंग नहीं। Yes. मेरी बात समझ में आ रही है? Yeah, sir. तुमको तुम्हारा मुद्दा ही होना चाहिए कि तुम जो भी लिख रहे हो वो चीज ग्रिपिंग एनफ होना चाहिए रीडर के लिए, वरना उसका कुछ होगा नहीं। मजेदार बनानी है स्टोरी। मजेदार का मतलब ये नहीं कि मजा, मतलब हंसी मजाक हो, कोई जरूरी नहीं कि हंसी मजाक हो, लेकिन पढ़ने पर मजा आना चाहिए। पढ़ने पे मजा नहीं, मतलब मजा का क्या तात्पर्य है? मजा से मतलब ये नहीं होना चाहिए हाँ 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 हंसी आ जाए, कोई जरूरी नहीं, तुम्हारी कहानी में हंसी का स्कोप नहीं है मान लो, Yes. लेकिन ऐसे मोमेंट्स हो जो कि तुम देखने वाला, पढ़ने वाला जो है वो घुस जाए तुम्हारी कहानी में उस मोमेंट में। Yeah. अभी तो घुसेगा क्या, बहुत प्रिडिक्टेबल सा है कि अच्छा हाँ यही होगा, बाप है तो बचाएगा ही, फिर बाद में जब बाप मरने लगेगा तो उसकी बेटी है आर्या, एक तो ये भी समझ में आया मेरे को, आर्या उसकी वाइफ है उसकी बेटी है? उसकी वाइफ, आर्या उसकी वाइफ है। Actually, I had mentioned that they are upper side, but I don't know how it managed. तो फिर ये सब दिक्कतें हैं, तो तुम तो मेरे को घुसने ही नहीं दे रहे हो, मौका ही नहीं दे रहे हो घुसने का, मुझे पता ही नहीं है कौन लड़की है आर्या, कौन उसकी गर्ल वाइफ है, बेटी है, उसकी पड़ोसी है जिसके साथ उसका अफेयर था, क्या है, कौन है ये, है ना। तो ये तो तुम्हारा कहानी, असल कहानी तो यहाँ होना चाहिए, ये आर्या कौन है और आर्या और इसके साथ अनूप के साथ क्या हो रहा है, तब मजा आता ना कि अरे अपनी फैमिली को बचाए या अपनी गर्लफ्रेंड को बचाए या क्या हो रहा है। मतलब कैरेक्टर में कुछ तो बात बन रही है, कुछ मजेदार कैरेक्टर सिचुएशन, मजेदार सिचुएशन बन गया है कि अब पढ़ करके मैं वेट कर रहा हूँ कि एंड में क्या होने वाला है, वो इधर जाएगा कि उधर जाएगा ना? तो ऐसा कुछ होगा तब तुम्हारी कहानी में कोई बात है। अभी इस रीड में ठीक है, क्या ही नंबर होगा, ठीक है, एक तो तुम्हारे इसमें डायलॉग्स कितने सारे हैं, बात भी कर रहे हैं लोग, तो तुमने वो सवाल का भी मतलब सवाल को भी ढंग से नहीं पढ़ाया है, ऊपर से राइटर भी उतना कोई खास नहीं है, तो मैं क्या क्या करूंगा ना, इतना भी जाकर के कुछ कर नहीं पाऊंगा। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। Yes. तीसरी बात, तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बात तुमको अभी तुम्हारा आइडिया है कि अगर तुम देखो, एक ऐसा नहीं कि इनफैक्ट इंग्लिश जो है सबसे इजी लैंग्वेज है धरती पे। Yeah. तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कंट्रोल पा लिया तो बहुत बहुत कमाल कुछ कर दिया, बहुत ऐसा कुछ नहीं, हिंदी पे कंट्रोल पा लिया तो बहुत महान काम कर लिया एक्चुअली। सो वो बात को समझना जरूरी है कि डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप कि यू हैव टू राइट इन इंग्लिश एंड यू हैव टू कन्वे इन इंग्लिश ओनली। तुम रोमन इंग्लिश वर्ड्स में हिंदी में लिख सकते हो, तुमको कन्वे करना, तुम्हारी कहानी निकल के आनी चाहिए, पढ़ने वाला एडजस्ट कर लेगा इमीडिएटली, वो पहला लाइन पढ़ते ही उसके दिमाग में जो है ब्रेन एडजस्ट कर लेगा जिसको ऐसे पढ़ना है, मुद्दा वो होना ही नहीं चाहिए। Now, I would just add something here also. This is my personal opinion, and nobody should feel offensive. FTI एंट्रेंस एग्जाम में 2 लैंग्वेज का ऑप्शन जो दिया जाता है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन में हिंदी भी एक लैंग्वेज रहेगा, मगर जब आप हिंदी में लिखते हैं एंट्रेंस एग्जाम का आंसर, खास तौर पे टेक्निकल पेपर जैसे सिनेमेटोग्राफी है, कोई और है, और इन जनरल, तो एग्जामिनर के दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि ये आदमी 15 साल तक अपनी जिंदगी में सोता रहा। मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल फील।
कि इसने 15 साल, 12 साल 12th और 3 साल ग्रेजुएशन, 15 साल में अंग्रेजी सीखने की जहमत नहीं उठाई। पहला इंप्रेशन उसका ये आता। उसके बाद जब आप लिखने बैठते हैं तो वो पहले से ही माइंड सेट होता है उस आदमी का। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एग्जाम के अंदर हमेशा पहला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको बेस्ट आता है। उसका कारण क्या है कि उससे एक पहला इंप्रेशन क्रिएट होता है कि ये आदमी जो लिख रहा है आंसर शीट, हालांकि एफटीआई में ऐसा नहीं कर सकते, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है और आंसर शीट उन्होंने दी होती है। तो आपका पहला आंसर गलत हो गया तो उसके दिमाग में आता है एग्जामिनर के आदमी ढीला ढाला आदमी है, इसको कुछ आता वाता ठीक से है नहीं। दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन. Now since 15 years you have been sleeping, now that cannot be changed within a few months before the examination. तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि या तो टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखो जो कि लोग लिख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, या फिर हिंदी में लिखो। और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर आप थोड़े से कड़क हिंदी वाली होनी चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ने के बाद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए कि मुझे हिंदी ठीक से मैंने नहीं सीखी, या मैं इतनी अच्छी हिंदी नहीं लिख पा रहा हूं जितना ये अच्छा लड़का लिख रहा है। तो अब ये स्टूडेंट पे डिसाइड करेगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, जब मैं कोई वीडियो डालता हूं तो वहां पे लोग बोलते हैं हिंदी में बोलो, तो मैं हिंदी में नहीं बोलता हूं। और मैं राज्य के उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय द्वितीय पाली भारत नगर से पढ़ा हूं, जहां पर कोई आदमी अंग्रेजी नहीं बोलता 12th तक। बट मुझे ये ब्रह्म ज्ञान 9th स्टैंडर्ड में आ गया था कि बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं होने वाला। मिस्टर नरेश शर्मा, ये बात लिखिए। 34 लोगों की क्लास में से मैं इकलौता लड़का था जिसका दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन हुआ था, नॉर्थ कैंपस में आफ्टर 12th। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई आदमी मेहनत करेगा तो अंग्रेजी सीख सकता है। बट अगर तुम 15 साल से अगर सो रहे हो, 15 में वो वाले साल ऐड नहीं कर रहा हूं कि मैं शुरू के 4 साल, तो आज किसी की उम्र 21 साल है और वो आदमी हिंदी में लिख रहा है, तो इसका मतलब उसने 21 साल अपनी जिंदगी के नींद में बिताए हैं। और अब अगर नहीं जागेगा तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर फ्रेंच, जर्मन, इटालियन लोग भी आते हैं पढ़ाने के लिए एफटीआई। और जितनी भी फिल्में पढ़ाई जाती हैं उसमें 90 to 80% लेक्चर भी इंग्लिश में ही होते हैं। तो ये रूमी फूमी टाइप लोग, टाइप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर अभी नहीं जागेंगे ये लोग तो फिर कभी नहीं जागेंगे। और अगर ये लोग फेल हो जाते हैं तो उसमें एक कारण ये भी है कि तुमने हिंदी में पेपर अटेम्प्ट किया, एक कारण ये रहेगा। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, वेदर यू टेक इट और नो, वेदर यू रिजेक्ट इट, इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस। बट नहीं, मैं वही कह रहा था कि अगर तुम्हारी हिंदी अच्छी है तो तुम हिंदी को ही पकड़ो। क्योंकि मैं अभी एफटीआई में था और अभी जो रिसेंट जो लास्ट बैच आया है उसमें एक लड़का है जो कि हिंदी में ही, जैसे सर बोल रहे थे कि 12वीं तक हिंदी में ही पढ़े हैं, वो हिंदी माध्यम से ही वो पढ़ा था और उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और वो अभी भी वो क्लास में भी वो इंग्लिश समझता है पर वो जवाब हिंदी में ही देता था। समझ लो, अब तो हिंदी से इंग्लिश करने लग गया वो, कहने का मतलब। लेकिन वो होता है, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ इंग्लिश नहीं है, तुम नहीं कर पाए हो अभी तक, तो अब तुमको, तुम्हारे लिए बेटर ये है कि तुम हिंदी में ही पकड़ के रखो उसको। बट हिंदी ढंग से लिखनी आनी चाहिए वहां पर। हिंदी की जगह बड़ी लगा दिया, छोटी। हमारी हिंदी की अगर ऐसी रहेगी तो फिर दिक्कत है। कि अगर हिंदी भी ठीक से नहीं आती तो सीधा गांव जाओ दरभंगा और खेती करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हिंदी बड़ी कड़क होती है। तो वो तुम्हारा डिसीजन है तुम्हें क्या लिखना है। और क्वेश्चन यही है कि वहां पर एग्जामिनर जो होते हैं जिनको हिंदी का पेपर दिया जाता है वो पहले कंफर्म कर लिया जाता है कि इसको हिंदी ठीक से पढ़नी आती है, लिखनी आती है। केरला वाले आदमी को हिंदी का आंसर शीट नहीं दिया जाएगा चक्कर में, दैट इज क्लियर, क्योंकि वहाँ केरला के भी प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं और आउटसाइडर लोगों को भी बुलाया जाता है वहाँ एग्जामिनेशन चेक करने के लिए। तो अंडरस्टूड है कि भाई हिंदी का पेपर तो उसी को दिया जाएगा जिसको हिंदी पढ़नी ठीक से आती है। तो जिसको हिंदी पढ़नी ठीक से आती है, जो पहले कंफर्म कर रहा है एग्जामिनर कि मैं हिंदी में पेपर चेक कर सकता हूँ, उसको हिंदी आती होगी तभी उसको दिया जाएगा, वरना दिया नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर अभी तक सो रहे हो तो अभी भी टाइम है, अभी जागो और इसको इम्प्रूव करो। और मैं तो इसमें सर के इसमें एक और लाइन एंड में ये भी ऐड करूंगा,
कम वाटर, उसके बावजूद मान लो कि वो भी नहीं हो सकता है ना, तो कम से कम भाई इतना करो कि तुम्हारी कहानी जो है ना वो इतनी इंटरेस्टिंग निकल जाए कि पढ़ने वाला उसमें खो जाए कि कहानी कमाल की बन जाएगी। समझ लो, तुम्हारी कहानी अगर दमदार नहीं है तो फिर ये सारी चीजें दिखने लगेंगी, यार तुम्हारी ये कमजोर है, तुम्हारा वो कमजोर है। कहानी में दम होना चाहिए, कम वाटर। ठीक है, तो अभिनव हम लोग एक काम करते हैं, कल हमने ब्रेक नहीं लिया था, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज यू आर द वन हु गिव द कमेंट्री। तो राइट नाउ इट इज 6:52, so we'll meet at 7:05. Is it fine, everybody? We have enough time because not so many people are there. We'll meet at 7:05. Is it okay? Perfect. Okay, 7:05.
Hello, sir. Can I start OJC here? You are not audible. I think you can start now. We are back now. Sir is there. Abhinav is there. Yes. Okay. So yeah, OC, let's begin. Okay, phone beeps. It's a WhatsApp message. A young hand picks up the phone. Hey Sonia, I'm coming to your place. Sorry, I'm coming to your place in 10. Need to tell you something that I have been holding in my heart for a long time. Sonia smiles while looking at the message. She jumps on her bed. She moves towards a table in which there is a photo frame of Sonia with a guy. She picks up the photo and hugs it. She turns on a caravan radio kept beside her bed. The song I Am in Love plays. She turns around. She keeps back the image and takes the teddy bear kept on her bed, holds its hand and dances around and jumps on her bed. She suddenly stops dancing, looking at the watch on her wall, sits on the bed, picks her phone and message back a guy named Rohan. Yeah, waiting, come fast. She then goes to bathroom and starts taking a shower. And while applying soap on her face, she smiles and moves it gently on her face. Suddenly she hears a voice. She goes out following the voice in her living room. She looks that it's the fire alarm. Sonia's face turns pale. She fastly wears a gown and takes her phone and runs towards the main door. She tries to open the door but is not able to. The door is stuck. She goes towards the balcony, but when she opens it, she looks there is a smoke, dust, and fume everywhere. Sonia coughs and tries to shout, instead gets suffocated and coughs. She moves inside, closes the balcony door. She falls on the floor, unable to take breath. She moves her hand towards her phone and tries to text Rohan but could only type H, which gets sent, and she falls unconscious. The teddy bear, which was on the bed, falls down. Downstairs, there are people who are running here and there trying to save their lives. Suddenly, a cab arrives on the main door. A guy moves out, and his face is in shock looking at this fire. He runs towards the building, but a fire guard stops him. He pushes them away, trying to go inside, but is pushed back and get hit by a pillar and falls unconscious. A note falls down from his pocket, in which there is a rose. A doodle of a couple is made on the note, beside which it's written, "From today, it's the start of our new chapter. I love you so much." Okay. Just give me a second. He runs to the building but a fire stops. Okay. So again, very similar situation would see here. No, also this is again for everybody here. Okay. So whenever you're writing a story, whenever you're writing, you describe in a line or two about the character. पहला चीज तो ये बहुत जरूरी है to let the reader understand who are these people, who is Sonia, who is Rohan. सोनिया क्या है, कितनी बड़ी है, क्या उम्र है, क्या करती है, अभी दिन है या रात है, कब लेटी हुई है, सोई हुई है, क्या हो रहा है उसके साथ, वो वर्ल्ड को पहले क्रिएट करना इज द बिगेस्ट challenge for a writer, to create the world in which that story is then placed, right? Now, if that world is not created, then it's a very haywire read for the reader. It's like क्या पढ़ रहा है, कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. What's happening? It is not interesting for him to read. Even if when we read a short story in our books or in textbooks पे या कहीं bar novel, short story collection से, see how they are formatted. They're formatted where the characters, their introduction is first laid down very clearly. यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम नहीं, लेकिन एक लाइन तो दे सकते हो, एक दो लाइन में तुमको वो कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है.
रोहन कौन है, सोनिया कौन है, दोनों के आपस का क्या रिलेशन है, वो फ्रेंड्स हैं, कहाँ के फ्रेंड्स हैं, वो क्या कॉल सेंटर में काम करते हैं और इसलिए फ्रेंडशिप हो गई, कहाँ से है वो रोहन, कौन है? अगर वो ही नहीं है तो फिर ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी को पढ़ूं, क्या करूं? मतलब इवन इफ इट इज क्वालिफाइंग, लेट्स से टू सम एक्सटेंट fitting correctly in the scheme of things, it is not a very moving story, you know? उस बिल्डिंग में कम से कम मान लो कि लेट्स से 80 घर हैं, 80 घर में 80 कैरेक्टर्स होंगे, 80 कैरेक्टर्स इस तरह की चीजें हो रही होंगी, तुमने यही वाला कैरेक्टर क्यों चुना, है ना? वो उस बिल्डिंग जिसमें आग लगी है उसमें if there are 80 flats, so there are 80 stories happening, तुमने यही स्टोरी क्यों पकड़ा, इसमें ऐसा क्या खास था, you know? So suddenly these questions start coming up. So there's nothing happening, no. She goes to take a bath, waiting for her friend, and yet not a boyfriend, or yet not a beloved. And then suddenly this happened. So there could have been a more dramatic element here somewhere played. She went inside the you know, to take a bath, and she comes out, let's say, and she's you know, making up, doing something, and something else happens, and which then affects something else, and then, you know, maybe she did not want to wear a cotton kapda, and she wore a silk kapda. Now suddenly silk kapda is, अगर the reader should have felt कि I wish कि वो cotton वाला पहन ली थी, उसके कपड़े में तो आग नहीं लगता या मुश्किल से बच सकती थी, अभी वो सिल्क वाला कपड़ा पहन लिया, अब उसको दिख रहा है कि बाहर आग लगी हुई है और ये सिल्क का कपड़ा पहन लिया। इस तरह का कुछ ड्रामा कुछ होता, कुछ चीजें क्रिएट करते हैं तो पढ़ने में और घुस जाते हैं ना। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें भी नहीं है, इसके पहले वाले में भी कुछ हो नहीं रहा है ड्रामा। हम ये स्टोरी क्यों सुन रहे हैं? मैं अपने लाइफ का 5 मिनट तुम्हारी ये स्टोरी सुनने में क्यों वेस्ट करूंगा एज अ रीडर, एज अ एग्जामिनर? मैं क्यों, इसमें क्या मिल जाएगा? So you have to think a little, you know, think a little more before you start penning down the story. Second thing, and this is again for everybody here, once when you've written down the story, just run through the story once, you know, because one small grammatical error, यहाँ का वहाँ, comma इधर का उधर हो गया, and the entire meaning of the sentence may change, and you cannot afford to have any such, you know, mistakes in such a critical examination. So be careful about these things. Right? What else could you have done यहाँ पे, Utsi? Give me a second, sir. Yes, sir. Actually, I thought of a thief. My first story idea was a thief in the fire. Thief. But I couldn't think much, and मैं भी timer लगा के practice कर रही थी. So then the second idea came, and yeah, I know what goof ups I did in this, and but because I wanted to practice in the time only, because ऐसे तो I can practice, but so yeah, I understand the mistakes that But see, happened. suddenly when the moment you said thief and the fire, fire building on fire, ये सुन के ही मजा आ गया कि अरे अब क्या मजेदार है ये ना। सो जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी हम लोग इंडस्ट्री में यहाँ पे अपने पिच कर रहे होते हैं ना अपने फिल्मों को, there's something called the one liner that you have to yeah, log line, right? Log line. So the log line or the one liner is something like that. A thief stuck in a building on fire, let's say. ठीक है, अब ये सुन के ही suddenly interesting एक catchy सा कुछ है, तो you should have actually went ahead and you should have created something on that. उसने चोरी करके रखा हुआ है, भाग रहा था, अब वो फंस गया, वो क्या करे, तो धीरे धीरे एक करके सामान फेंकते जा रहा है क्योंकि उसको भार बहुत है, उधर नहीं पाएगा, ये हो गया, वो कितना सिचुएशन बन सकता है। एंड इवेंचुअली जब तक फाइनली उतरता तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं, मतलब वो एक ही चीज करके सब कुछ, something like that could have been written, and it would have been a very interesting read and a very interesting yes sir.
Yeah, it's a little, this one is cliched, and I knew while writing also, but I restricted myself to the time so that I knew that by in this time, if I'm not able to finish an idea. Yeah, so rest or his explanation. So that is a Yeah, I get your point. Yeah, but then this is where you have to be really. But he, I mean, matlab, I don't know what to how to judge this, no, because the moment it's not so very interesting story or something which is very dull, in itself. It doesn't catch anybody's interest, forget about me, anybody, nobody would want to, So all this time, usme and whatever that you've done may go for a waste, So and you may simply just getting half the mark of what you could have otherwise achieved. So understood. Okay, sir. Thank you. no worries. Yeah. Okay. Yeah. I wrote dialogues. That's my mistake because I did not read no dialogues aloud. अरे अच्छा Yeah. Bhanumati ये का क्वेश्चन आपने एकाग्र सिंगल अभी आपने जो बोला I did not read no dialogue aloud. Would you do that in the examination? no, not at all, sir. मतलब So why are you doing here? Because you are taking it casually. Because you are taking it casually. Would you do this thing in examination? You are out. You lose the 15 marks. आपको मालूम है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था एग्जामिनेशन में? पेपर देखे होंगे अगर आपने पिछले, तो आपको एक पता होना चाहिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन था. Understood, sir. So you, like many other people, 40 people have registered for this class. Okay, on an average 15 hours serious. बाकी 25 लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं घर में बैठ के. ठीक है, तो वो तो भूल ही जाओ. हर एक का अपना एक एक्सक्यूज है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा. जो फिक्स्ड क्वेश्चन आंसर है ना, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट न्यू वेव, 25 किताबों में मिल जाएगा तुमको. ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट फिल्म थ्योरेटिशियन, आंद्रे बजा पे 50 किताबें मिल जाएंगी जिसपे आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा. बट ये जो प्रैक्टिस है ये आपको कोई नहीं करवा सकता. जो गलतियां कर रहे हैं, हर आदमी 3 गलती कर रहा है कम से कम, वो आपको कोई बताएगा नहीं कि ये 3 गलतियां क्या है इसके अंदर, वो यहां पर बताई जा रही है. तो आप ये कैजुअल एटीट्यूड लेके चलेंगे कि नो आई डिड नॉट रीड इट, इसका मतलब तुमने आज से पहले क्वेश्चन पेपर भी नहीं पढ़े. करेक्ट? अगर तुमने आज से पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो वहां लोड किए हुए हैं एफटीआई की वेबसाइट पे अगर पढ़े होते तो तुम्हें आइडिया होता. ना तो तुमने पहले पढ़े क्वेश्चन पेपर आज तक, और अब जब तुम्हें एक असाइनमेंट दिया जा रहा है तब भी तुम नहीं पढ़ रहे हो. नहीं sir, I have read the questions, last two questions. बोल क्यों रहे हो कि I did not read the right without dialogue? Yeah, that The was. moment you make this statement, it means you are acknowledging and confessing that you did not read it. Yes. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर 2 talented and sincere student of previous batch, दुर्गेश्वरी शर्मा और एक और लड़की है, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, वो आज नहीं है यहाँ पर. 2 sincere talented people could not qualify last year because the examination pattern got changed and MCQ MSQ was evaluated first and then second paper would be evaluated. तो फेल तुम होगे, मैं नहीं होऊंगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, I totally understand, sir. So if you don't take it seriously, you would suffer. That's what I'm telling you. Yes. See, just to add to what Sir is saying, you have to understand it's a extremely क्या कहते हैं उसको यार, very competitive exam. It's like one small mistake and there's somebody else who's just behind you, he will take over. It's Squid Games. You can't afford to, you just cannot afford to do this, right? So you have to be very, very careful. That's what I'm saying. Exam, this is the only exam perhaps, where you can afford to be not stressed. The moment you're not stressed, you will be more careful about these things. You'll be reading things very carefully. The moment you're taking it as a burden, exam, you've lost half the battle. Be relaxed, be chilled out, read the questions carefully,
Take your time, because it's all about creative mind, right? Yeah. And the creative mind works best at moments of peace. Stressed out moment में creative mind काम ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा. So you have to be very careful about these things, right? ठीक है, चलो, let's. Okay. Bhanumati comes running out of the building, breathing heavily as she halts to take a breath, and suddenly notices the tail end of her sari burning. She looks at the tall building behind her as it has caught fire and the flames are getting higher each passing second. She looks around and finds her elder son running about and crying. She gets hold of him and asks, Gudiya kitthe? The boy is in a state of shock and is unable to respond, seemingly choked with all the smoke that he breathed in. She starts hitting him and shrieking, Gudiya kitthe, Gudiya kitthe? Itthe, comes a voice from behind as this calm, graceful old man with his shiny, wrinkled skin taps her shoulder and is holding the little child in his arms. Bhanumati starts weeping and tears of joy flow through her eyes as she takes Gudiya from him, as he gently hands her over to her. She is momentarily lost in cajoling and kissing her child to comfort, and as she holds her head up, the old man is not to be seen. She looks around through the commotion, people running around, firefighters trying to douse the flame, people coming running out of the burning chawl, the loud sound of engines and the mock observers standing around the space. She scars through and the man is nowhere to be seen. Ma jal gaya, says the little girl, and Bhanumati starts attending to her. Okay. That's it. Okay. Just for my understanding, this माँ जल गया is what? साड़ी जल गया और वो क्या जल गया? Okay, that's basically the child saying like her skin or something. There's a Oh, bird, basically. now see again. So you could have mentioned ki the little girl, pointing out towards the shoulder or somewhere, Yeah. and then she does माँ जल गया. So you again, Ekagra. The thing is, I'm just kind of repeating myself, but hear me out. I am in a very stressful situation while attending these questions, these answers. Right? I have to cover something like 6,000 papers in a very in I think 5 or 6 days that time. Right? So, or maybe a little longer, but whatever. That's the kind of a stress the examiner is in. Right? You cannot afford to leave him with question marks. Right. Here in these answers. You should clearly round it off. You should clearly, if need be, spoon feed the thing. Don't try to be, too arty by creating these ambiguous moments. It doesn't work here in these cases. It's a wonderful situation you have created. You have taken a very tiny moment out of this huge mess that has happened, right? And that's very interesting in itself. A woman looking for her child, and then suddenly old man comes with the child. And suddenly when the moment she realizes, I have to maybe thank the old man, and she sees that the old man is nowhere to be found. And which is fine. Perhaps he went inside again to get some other people out, which is understandable. But this moment is very interesting. You could have actually tapped on the emotional content of the moment. The woman, mother, fear of her child being lost or dead, and then that child is there. This personal emotional moment becomes the core of your story. That could have, it just have to be a little tweaked, and then suddenly that becomes the point of focus. Now in all of this, again, I don't think it is qualifying for a 400 word thing. I don't know if it is. No, it's like about 290 words. So then you could have used 100 words, wisely to add to whatever that you're trying to create. Yeah.
Why did you shy away from that? Why did you not This exploit the? this is a situation I'm facing like regularly. So the thing is, while I'm writing, so it's like when you have to like you have a limitation of 400 words, let's say, and you basically are thinking you have to end in that. So like I kind of try to kind of make sure that I don't cross the limit. And in doing that, what happens is actually end up like reducing some elements which I have running in my imagination, but then I'm like, you don't know, you might just end up crossing the limit because in the exam it's basically you got like 4 pages or 3 pages and you have to there's no more space. I get your point. Yeah. So अब एक अंदर की बात बता रहा हूँ तुझे, एक अंदर की बात बता रहा हूँ, and this is for all of us here. वहां पे कोई ना कोई words गिन नहीं रहा है, ठीक है? Nobody is counting कि तूने कितने लिए हैं. Now, if your read is really interesting, if your story is really interesting, the examiner wouldn't mind even if it is 420 words. He wouldn't even realize, right? So, you should not get affected by am I crossing the limit? Am I not? You just have to keep that in brief in mind. Yeah, I have to be in that stipulated asked amount of space and words. basically, as you would know, like in the exam, they don't give you a word limit exactly. What they tell you is within 3 pages, within 4 pages. Well, I'm not too sure right now how is it happening. एक मिनट अब थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू करो जिंदगी के अंदर. 2% दिमाग लगाना ज्यादा नहीं. Yes. वो जो पेज दिए जाते हैं वहां पर है, उसका एक प्रिंट आउट निकालो और एक लाइन में लिखना चालू करो और चेक करोगे कितने वर्ड्स आते हैं. One of my previous question which was sent to you had this calculation over there. So yes, sir, you had given it. So indirectly they are telling you that so many number of words are required. हाँ, मतलब यहाँ पे भी 400. Still there is a words. Exactly. And they are giving you pages, which means number of lines. They are still giving you. अब हो सकता है एक आदमी थोड़ा सा एक आदमी एक लाइन में 7 वर्ड लिखेगा, एक आदमी हो सकता है 8 वर्ड लिखेगा. बट एवरेज तो 7 और 7.5 का ही आएगा. तो मैंने वो कैलकुलेशन किया हुआ है और इसीलिए पहले मैंने आपको वो कैलकुलेशन एक बार समझाई भी. Yes, sir. Yes, वो कैलकुलेशन नहीं समझाई जाएगी. So there is a word at the end of the day. Okay. And whatever, see, you have to understand यहाँ पे भी 400 words लिखा, उसका intent क्या है? The idea is to you should contain your story in that is the challenge. No, लिखने के लिए बैठ जाओ तो फिर तो मैं तो ताजमहल बना दूँ. But वो challenge ही नहीं है ना. Challenge तो है कि इतने में कब कैसे तुम अच्छी चीज लिख सकते हो ना. That is the challenge. ठीक है. तो उसके आसपास रहना जरूरी है. That is for sure. But don't be conscious कि अरे am I 390-95 हो गया ऐसा ये, क्योंकि तुम्हारा then you're not really focusing on the story, but you have to keep that brief in mind. अच्छा, this is the limit that I have to stretch my story in. I shouldn't be crossing this. 400 limit words मतलब इतना होना चाहिए, इसके आसपास में ही होना चाहिए, you know, and then focus on your story. Also because even for you at the time when you're writing the story, it's a very stressful. Come what may, it will eventually, you will be gripped in, kind of, because तुम्हारे पास टाइम नहीं है. 3 घंटे का ही टाइम, 3 घंटे में ये कैलकुलेट किया तो 10 मिनट 12 कितने 12 मिनट मिलेंगे सर इस सवाल के लिए? आई गेस 12 से 15 मिनट. आई डोंट नो. नरेश सर, there is a basically number of marks allocated and number of lines allocated. तो एवरेज जो है आप ये मान के चलिए कि अगर वहां 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं और आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, तो ऑन एन एवरेज जो है अगर 20 मिनट के करीब पकड़ लो. 20 मिनट पकड़ लो. 20. तो और एक चीज और याद रखो, एफटीआई में बड़े गधे भरे पड़े हैं. आई रिपीट दिस सेंटेंस, गधे भरे पड़े हैं. और मैं डरता नहीं हूं बोलने से. क्यों? वो जब पेपर बी तुम्हें देंगे तो वो तुम्हारा 10 मिनट बर्बाद करेंगे. पुराना पेपर लेने में और नया आंसर शीट देने में 10 मिनट बर्बाद होने वाले हैं. ध्यान रखना. और वो 1.5 घंटे बाद ही होगा. अगर तुमने पहला पेपर 50 मिनट में कर भी लिया तो तुम उन एफटीआई के हिसाब से 40 मिनट दीवार देखते रहो बैठ के.
40 मिनट दीवार देखो, उसके बाद वो जो वहां पर घूम रहे हैं लोग, उनको इंस्ट्रक्शन होगी कि अब आप बच्चों का पहला आंसर शीट अगर आपने जमा भी कर दिया है, तो जो लोग लगे होंगे खोपड़ी खुजा रहे होंगे इसका एमसीक्यू क्या है, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो उन लोगों में और नया पेपर देने में 10 मिनट बर्बाद होते हैं। पिछली बार का लोगों का ये एक्सपीरियंस है। यहाँ पे दुर्गेश्वरी बैठी हुई है, पूछ लो। तो Understood, तुम्हारे sir. 1.5 घंटे में से 10 मिनट तो वो चले गए। अब कितने मिनट रह गए? 60 प्लस 20, तो 80 मिनट के अंदर आपको 4 आंसर जो है अटेम्प्ट करना। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना खेल है। ठीक है दोस्त, चलो। हाँ, ये पूरा पूरा मामला ना गणित का है, you have to be very ये calculated. बहुत ये जो मैंने बात बोली, ये तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर में जाके समझ आएगी। जब तुम 1 साल बर्बाद कर लोगे, उसके बाद अकल आएगी तुम्हें कि अरे इन गधों ने तो मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए, और तुम उनको बोल नहीं सकते कि तुमने मेरा 10 मिनट बर्बाद क्यों कर दिया। Yes, sir. I had like 2 questions. Can I ask? Yeah, sure. Please go ahead. Yeah, thank you. So I want to ask, like, this is something I was thinking to like put in more stuff. Can we add a parallel tangent within the thing we are writing? I didn't really get you. So like for this one, I had this idea कि like this whole burning and thing is happening, this whole event is happening, and meanwhile what's happening in the background, I bring in about a 50-100 word thing happening at the back, and then I come back to the core event happening. Would that like be a good add-on, or would it take away from the So story? let us try and understand what is the function of this writer, right? Again, I'm coming back to the same thing. Had it been that you were writing this for, let's say, a short story writing contest, then it was a different story. Then it was a different picture. I mean, मेरा कहने का तब वो दूसरी बात थी. Right now, you are attending to write the story for a particular, very specific reason. And the reason is that you have to clear this examination. Right? Now, in this, my suggestion would be to not get into complexities in your write-ups. Understood. Unnecessary complexity, which might confuse the reader who is already under stress, is not going to help you. Until you are so confident, until you're a master in this craft. If you're sure about it, go ahead, no worries. But if you're not very sure, even if it strikes very interesting, हो सकता है tangent यहाँ add कर देते हैं, that might not be of your help, because it is only going to confuse the reader, for a moment, and he just might want to see, अरे ये क्या हो गया, Understood. कुछ miss कर दिया क्या मैंने? And the moment that happens, मतलब वो तो already you have already broken that thread, and you cannot afford to break that thread. The moment he is into your story, he should come out only with the last full stop of your story. If that happens, you have won over. You have taken him into confidence. He is all yours. But if that doesn't happen, if he is facing breaks for whatever reason, then it's not a healthy thing happening with you. Understood. So be simple, and it's so simple doesn't mean ki stupid. Simple is not stupid. Simple is wonderful. Kushwant Singh is one writer who has in his life only written very simple stories. Yeah. And yet he is one writer we all revere, because भगवान जैसे उसको सोचते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसी कहानियां लिखता था, सिंपल कहानियां, सिंपल चीजों को लेकर के, सिंपल मोमेंट, सिंपल लैंग्वेज. तो वो कैसे कर लेता था? उसमें कोई उसको ग्रामर अपना वो इंग्लिश का वो और उसको कॉम्प्लेक्सिटीज कोई लेने देने नहीं था. Why can't we try and do something here as well in the same line? Because the idea is I have to crack this examination, and you'll get enough of your, in future, enough of platforms where you can actually exploit those things. Understood. And the second thing was, like, can we, like, this is a serious situation essentially. Can we, like, if somebody wants to, and if we end up making this situation funny, would that kind of... Why not?
Why can't you? In fact, Acha, it's fine. who says ki funny things doesn't happen in such grave situations? In fact, one of my seniors. Okay. Okay. And one last thing, like how much can we edit there? Because right now, though we are typing, so we have that kind of bandwidth of being able to edit stuff while writing. But there we are writing with pen. So No. it's like, can There- I kind of go back and like cut stuff and do it with that? Which is why I keep telling you guys that don't immediately start or jump into writing your story. 20 मिनट का टाइम मिल रहा है, अभी हमने कैलकुलेट किया, उसमें से अगर तुम 5 मिनट भी निकाल लो या 4 मिनट निकाल के सिर्फ कहानी को फ्रेज कर लो दिमाग में, that is far more 100 times more beneficial than you immediately jumping into writing the story and getting yourself stuck or in a mess. Understood. So phrase yourself here, phrase the entire story here, and then start writing. Have the story ka opening, middle, and end dimag mein. Even roughly is good enough. And then, because the moment you have situations in your head, you have already thought about the situations. Writing is just a tool. You're just writing those situations. The situations are important. And you tend to get messy or confuse yourself because your situations were not clear in your head. So you have to be very, very clear with the situation that you have created. वो एक बार दिमाग में क्लियर हो गया तो फिर राइटिंग तो तुम तो 20 साल से कर रहे हो ना. So writing is not an issue. Thinking is an issue. So give yourself plenty of time and then jump into it. Got it. Thank you so much. Yeah. Anything else? Sorted. Cool. Should we move ahead? Ananya Das. Yeah, sir. So am I audible? Yes, Ananya. Yeah, sir. Yeah, then go ahead. Yeah, sir. Kalki wakes up from her sleep as the sirens outside buzz vehemently. She draws the curtains forcefully to see the chaos outside. एक minute. What is this first line? The three newbie No, friends? sir. That is the yesterday का जो एक line छूट गया था ना, मेरा screenplay का जो लिखा था. अच्छा. वो आ गया उसमें. It's not related. Oh, okay. Fire engines, firefighters. Yes, just एक बार फिर से. Yeah, sir. Kalki wakes up from her sleep as the sirens outside buzzed vehemently. She draws the curtains forcefully to see the chaos outside. Fire engines, firefighters, and commoners thronging the streets. Kalki gently caresses her swollen belly. She starts coughing while she checks her phone before leaving the hotel room. It was a message from her father. She leaves the room as she slams the door forcefully behind her. A pillar wrapped in red cloth falls before Kalki, saving her by inches. Kalki moves forward, keeping her mouth cupped with her hand. Her floor was almost empty. Only fire flames occupied spaces, leaving very little room for her to escape. She takes the fire escape route, carefully gets down the stairs while the fire engulfs whatever it found in its way. Kalki finds a dead body still burning and several others as she moves further down the stairs. It was smoky everywhere. She could barely breathe or see anything. She had finally reached the exit, but her escape seemed slim. Before the door were heaps of burning dead bodies. She looks to her left to find a fire extinguisher. She extinguishes the fire and moves the dead bodies away from the door. But she couldn't open the door as the handle of the door had heated up. Kalki used her maternity top to turn the doorknob, but it didn't help. So she pulls one of the dead bodies and uses its hand to unlock the door. She succeeds. She gets out, but her top catches fire. She removes her top immediately. She walks she walks slowly, not trudgingly, holding her belly till she could take no more. She falls to the ground sideways, mostly slipping into unconsciousness. She removes her phone from her pocket and reads her father's message one last time. It said if she needed any help, he was always there. But how could she? Her parents would never accept her pregnancy. She calls her father to come at Rajveer Hotel. It's on fire. Kalki slips into unconsciousness. Kalki opens her eyes to find herself on a stretcher.
She places her hand on her belly protectively. Everything seemed blurry. There were people all around her to help her. Amongst those blurry, anonymous faces, she could see her father standing, tears welling up in his eyes. Kalki smiles faintly and closes her eyes as she felt tired and safe. Now, this is such a fantastic writer, Thank you, sir. Ananya. Thank Why? you, sir. Why? Because you just qualified everything that is asked for. And at the same time, your writer is interesting enough to have kept me engulfed in it throughout. Right? And those, these small, nuanced situations that you have created, that the knob is not turning because it's really hot, and it's very common in a situation like that. A knob will actually, a metal knob will actually turn out to be really hot. So, and the way you have then used, and then eventually the dead bodies on fire, and or burning bodies. God knows if they are dead already or they are going to die. So all that visuals and everything is so stunningly, creating that imagery in my head that I'm enjoying in a different way. Actually, the read. I'm engrossed in the read. My mind is totally, absolutely into the story. So are we all here, people? Are we listening to this? Yes. Yes, sir. So this is one fantastic example कि तुम बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई एक डायलॉग बोले, बिना कुछ ये किए, तुमने एक कहानी रच दी जिसमें कि वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ये क्वेश्चन मांग रहा है, आंसर सीख कर रहा है. ठीक है, एक दो चीजें हैं यहाँ पे, वो भी क्लियर कर लेती तो it would have been really even better कि who is Kalki? I haven't given एक line का, अगर if I'd given that character description, that I made a mistake, and और एक छोटा सा grammatical error हो गया है, वो भी मैंने अभी देखा. So that fine, but who is Kalki suddenly will all the more make me see Kalki also. I couldn't see Kalki. See Kalki, I had to see Kalki as I read the story. Yes, sir. So you have to be, Yes, sir. So, and somehow it was also interestingly creating visuals or creating. Why was it interesting? I'll tell you. I'm trying to figure out why it was. एक तो जो भी बताया मैंने कि the visuals are very real and very real. मतलब very real and very dramatic. So you can't escape these visuals. You can't really ignore them as a reader. You are immediately caught onto the story. Second element which is very interesting is कि it's a hotel room, you said. Hotel room. Then she gets out. It's a hotel, right? Hotel, yeah, it's a hotel. She's in, right? Yeah, she's in a hotel room, and isliye I wrote the first line that she wakes up from her sleep. That means she's in her hotel room in the first scene. Here, then she shuts the door. Then she goes out of the room, of her hotel room. As she draws the curtains and sees that ki aag lag gayi hai. And she even gets the smoke, and then she shuts the door, and then she moves ahead, and then she goes to the that fire exit. Right. Now my point is why I was also all the more curious was because I was thinking, is it the same hotel that the Bombay mein? No, sir. No, wrong. Hear me out. Yeah. But but as I was reading, my brain was engaged. Yeah. My point is I was engaged. Yes. Oh, is it the same story? Is it coming from there? Oh my God. And hence I was all the more engrossed. For those 3-4 minutes, I totally shut out my brain from other engagements. It was totally, absolutely here because it has those elements which were captivating, which could immediately sink you in, Yes, sir. Am I making sense, people? Yes, sir. Others? Yes, sir. Yes, sir. So idea is although you cannot really force yourself to think something like this at that time of crisis, but if something like this comes up, go ahead with it with confidence and try to get into micro. See, the moment यहाँ पे बोल दिया गया कि आप dialogue नहीं use कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको इतना restrict कर दिया गया है ना, तो उस restriction में क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ.
बता देता हूँ। उस ऐसे रिस्ट्रिक्शंस में एक कैरेक्टर जो कि एकांत में बैठा है या कुछ कर रहा है अकेले में, और वो क्या क्या कर सकता है, कैसी कलाकारियां कर सकता है, वो काम आएगा आपको। ना उसको डायलॉग बोलने की जरूरत है क्योंकि वो अकेले बैठा है, ना उसको कोई और चीज, कोई और एंगेजमेंट से किसी और के साथ एंगेजमेंट का हेडेक नहीं है। अकेले में क्या कर सकता है वो इमेजिन करना। तो ऐसे मोमेंट्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कि जहाँ पे इस तरह के सवाल आएंगे, जहाँ डायलॉग नहीं करना है और आपको ऐसा कोई सिचुएशन है तो क्या कैसे टैकल करोगे। सो इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, Thank you, sir. Aranya. Any questions you have? Yes, I had a question, sir. Everyone is talking about FTI, है तो किसी ने SRFTI की actually बात ही नहीं की, sir. I had to ask you. Okay, I am so यहाँ sorry. पर जो है थोड़ा दिमाग लगाइए आप सब लोग, जब हम लोग FTI की बात करते हैं तो उसमें SRFTI इंक्लूड है। Yes. जैसे जेट एंट्रेंस एग्जाम की बात हो रही है, डोंट टेक इट पर्सनली इफ यू आर अ बंगाली। No. There are two reasons for it. Bengalis keep sleeping in their life. I'll prove it. How? I'll prove it. How? FTI applied for 1-year diploma to be equivalent by AICTE, right? SRFTI is still sleeping. All the Bengali boys, I know them personally, they are still sleeping. None of them is a bloody bothered about making a draft and sending to an organization called University Grant Commission, Association of Indian Universities. Okay, FTI did it. And they also did a follow-up of their 3-year diploma to be equivalent to a degree. SRFTI is still sleeping. So these Bengali boys keep sleeping in their bloody life. Last year, I repeat that word bloody in their life. Last year, throughout the year, they did not loaded the question paper of FTI entrance exam till 4th of December, when the FTI announced the entrance exam. 4th of November or 3rd of November, the SRFTI, it was the SRFTI was conducting the exam. So they had the previous year question paper. They were supposed to load it. So on 7th of November, they woke up and loaded the question paper over there. You understand why people are not talking about SRFTI? Because they're Bengali boys, Banerjee, Chatterjee, Mukherjee, sleeping in their life, earning 1 lakh rupees and doing nothing except posting a Facebook post. You want me to go on? I can carry on for 1 hour. Do you want me? Okay. They took the decision. That's the worst thing. Academic Council do not have a power to decide to change the rule and regulations. They change the rule and regulation without taking the permission from the governing body. And later on, they took the permission from governing body. They have not yet disclosed so far, even after filing the RTI. These are the Bengali boys. As I said, I can continue for 1 hour, but you will not like it. So let's close the discussion. Bhavik Patel, are you here? Yes, sir. You should change your email address to lazyismyname@gmail.com. Yes, You sir. understand what I'm saying? Right. You are not a smarty boy. You are a lazy boy. Everybody here send before 4 o'clock. Okay? Yes. We gave you enough number of hours. You keep sleeping and then you send it later on. But we have still included, if there is a time, you can read it. Next time, we will not include that. Take it very, very straight. I am a man who tell the things on the face. And as a professional, this is a kiddish email. Lover boy, funky girl, trendy girl, all this shows your immaturity. Okay? Your name is Yes. Bhavik Patel. Your email should say Bhavik Patel. That's it. Come out of this kiddishness, otherwise you will suffer. Okay? Carry on. No, but that's very curious. I mean, Smarty My is your email address is naresh.sharma@craftfilmschool.com. My email is not loverboy@gmail.com or funky boy, trendy boy, jazzy boy.
all this shit is out. You are in a serious business. Somebody is gonna invest 5 crore rupees on you. I will look at a email, Smarty is my name, out. Next, बुलाओ आगे. बात ही नहीं करनी मुझे. You understand? You have to be professional, and professionalism come from your visiting card. Since you have paid 15,000 rupees to me, that's why I'm telling you, otherwise I will not tell. Let's start now quickly. Okay. So, Sir, yeah, this is yesterday's story. yeah. So, sir, are we discussing yesterday's story also or just today's story? Naresh sir? Just scroll down. सर हम ये कल वाली स्टोरी भी डिस्कस कोई कर भी रहे ले हैं लो, वो 15 मिनट का टाइम है. 8 o'clock we will wrap up. So whatever he want to ask him, what he want to do. Sir, yes, this is day 2. Yes, it is here. We have a Okay, 10-minute time, so we'll take up whatever comes within 10. Cool. So let's Ask begin him with what he the want to do. कौन सा what do you want to discuss first? Yes, sir. No, Sir. sir, I will read out today's day 2. Okay. Okay. On the eve of Diwali festival, people are decorating their homes with various lights. The school has been now closed for Diwali vacation. Children are playing in the ground. All of a sudden, the happy atmosphere is disturbed by a loud noise. People start running out of the house in a great confusion. All children stop to play and rush towards the building. Some people climb on the roof of building. There is noise all around. The building has caught fire. The flames are rising high up towards the sky. Clouds of smoke rising out of a high building. Everybody feared that a big fire would spread in the whole colony. The siren of the fire brigades is heard. The firemen and the policemen rush to the building to bring the fire under control. People are also trying their level best to help them. People want to put out the fire with buckets full of water and bags of sand. Save us, please save us. The shouting of people comes from the building. There are some people who are trapped on the 4th floor of the building. The fireman below manages to spread a sheet. People jump through the window one by one. The only boy is not able to jump. He is very horrified. One fireman put a ladder against the wall. He ran up like an arrow. The small child is brought down out of the flames. Both the boy and the fireman are choked with smoke. Everyone praised the fireman of his bravery. The flames are controlled now. It takes 2 hours to bring it down. The flat on the 4th floor of the building are burned to ashes. There are only some casualties. Some people are taken to the hospital. The owner of the flat is in great distress. People are asking him how the fire broke out. He says that the fire was started due to short circuit in electricity. In any case, the owner of the house suffer a heavy loss, but it is good there is no loss of life. Okay. तो भाविक मेरे को अब जरा we have like 7 minutes. उसमें 2 मिनट में तुम मेरे को बताओ ये कहानी में क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या ड्रामेटिक क्या हो रहा है. मुझे ऐसा लगा पढ़ करके कि तुमने एक न्यूज रिपोर्ट क्रिएट की है. एक बिल्डिंग में आग लगी तो तुम वहां पे कैमरा लेके गए हो और जो हो रहा है दिख रहा है तुमने कर दिया ना. सो इसमें वो हिडन स्टोरीज वाली बात कहाँ है, जो स्टोरी जो क्वेश्चन का डिमांड है कि देयर आर सो मेनी हिडन स्टोरीज एक्सप्रेस वन ऑफ दोस थिंग्स. तो वो क्या हो रहा है, क्या इसमें क्या है, क्या मान लो कि तुम इसमें से वो वाला मोमेंट भी लेते कि जो बच्चा डर रहा है जंप. एक तो पहली बात मेरे को बताओ ये 4th फ्लोर से जंप कैसे कर सकता है यार वो बच्चे के, मतलब ये लॉजिकली करेक्ट है क्या? हाँ ये सर, ऐसा जब आग लगती है तो ऐसा होता है. फायर ब्रिगेड वाले जो ऐसी जो सीट है ना उनके पास रखते हैं और ऐसे स्प्रेड कर देते हैं अगर स्टेट से आना मुश्किल हो तो.
अच्छा, और वो शीट पे जंप करते हैं लोग, कर सकते हैं Yes. जंप। हेलो, am I audible? हाँ, Yes. ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है ना, ये जो 3-4 पैराग्राफ जो बनाया है तुमने, इस पूरे में तुमने सिर्फ डिस्क्राइब किया है एक सिचुएशन जहाँ पे आग लगी है और उस बिल्डिंग में, और छोटी छोटी चीजें जो हो रही है, बट कहानी कहाँ है, क्या है कहानी, क्या है? दैट्स माय क्वेश्चन। एम आई मेकिंग सेंस? Right. वो कहानी कौन सी, क्या है कहानी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? क्वेश्चन था बिल्डिंग ऑन फायर, देयर आर 5 इंजन्स, फायर फाइटर्स, रेसिडेंट्स who have rushed out. एक मिनट. A crowd that has gathered to watch and to help. Within this chaos, mind you, within this chaos, there could be many hidden stories. Unravel one of these by creating a character and her situation through the use of images and sound. No dialogue allowed. तो तुम्हारी कहानी में कैरेक्टर कौन है? तुम्हारे कैरेक्टर का नाम क्या है? तुम्हारी कहानी में कौन है कैरेक्टर, बताओ। वो सर डायलॉग अलाउड नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरह का लिखा। अरे भाई, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर का नाम तो होना चाहिए, कौन, किस कैरेक्टर के बारे में तुम कहानी है? कोई एक कैरेक्टर है नहीं, कौन हीरो कौन है? हीरो से मतलब कोई बलवान हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेन कैरेक्टर कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है? वो बच्चा? ऐसा नहीं, ऐसा कोई प्रोटोगनिस्ट नहीं है कहानी। तो वही तो है ना, तो सवाल, फिर तुम सवाल को तो जवाब ही नहीं दिए, तुम सवाल तो पूछ मांग रहा है सवाल कि अनरावल वन ऑफ दीज हिडन स्टोरीज by creating a character and his or her situation through the use of sound image, no dialogue allowed. वो कैरेक्टर को तो आपको बोल रहा है कि आपको क्रिएट करना है वो एक कैरेक्टर, है ना? उस सवाल का डिमांड है, वही सवाल तो कुछ और है, तुमने तो डिस्क्राइब कर दिया एक सिचुएशन जो आग लगी। तो मतलब या तो सवाल पढ़े नहीं ध्यान से, या तो समझ में नहीं आई, कोई इतना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो है नहीं, वो सिंपल सा सवाल है। और सर कैरेक्टर को यूज ऑफ इमेज के थ्रू डेवलप करना है, मतलब उसका क्या मतलब रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब सबसे पहला बात तो ये है कि भैया एक कैरेक्टर तो तुमको क्रिएट करना पड़ेगा ना, वो तो मांगा ही है सवाल में। राइट। वो तो सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है भाई उसमें से एक कैरेक्टर बनाओ, और उसके बाद तुम उसके साथ साउंड और इमेज के साथ जो करना करो, ठीक है? और वो कैरेक्टर तो पहले बनाओगे, तो उसके बाद तो तुम साउंड और इमेज पे आओगे कि आप साउंड और इमेज का क्या करूं। चलो, कैरेक्टर बना दिया मैंने, फारिक भाई कोई है, या वो बच्चा जो भी है, ठीक है? वो बच्चा तुम्हारा कैरेक्टर है, वो सब जंप करके वो नहीं कर रहा है, अब उस बच्चे के लिए सिर्फ फायरमैन जो है ऊपर चढ़ रहे हैं कि वो जंप नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, और बाकी तो जंप करके वो एक अकेला बच्चा नहीं जंप कर पा रहा, लेकिन हमें तो उसको बचाना है। तो बचाने के लिए फायरमैन जो है चारों तरफ से ऊपर इस तरह से मशक्कत करके चढ़ रहे हैं, और वो तुम्हारी गाड़ी में है, तो तुम्हारा कैरेक्टर बन जाता है वो बच्चा, है ना? राइट। तुमने मेन चीज ही नहीं करी कहानी में जो मांगा है, ठीक है? डायलॉग नहीं यूज किया हो तो ठीक है, डायलॉग तो खैर इम्पोर्टेंट है, बट वो डायलॉग वाला पार्ट तो बाद में आता है, वो तो उस कहानी के डिमांड के बाद एक कैवेट है कि अच्छा ये भी है साथ में भाई साहब, ये डायलॉग भी नहीं होना चाहिए, बट मेन कहानी का मेन कोर क्वेश्चन तो है कि भैया तुम वो कैरेक्टर तो क्रिएट करो जो कि इस स्पेस में बिहेव करेगा। तुमने स्पेस को ही बना दिया बस, और स्पेस भी बना बनाया ही था, तो कुछ नया नहीं है। फायर फाइटर्स बोले हुए हैं, फायर इंजन बोले हुए हैं, लोग भीड़ में हल्ला कर रहे हैं, बोले एक बंदा है तुम्हारा, वो मकान मालिक है, चलो वो भी इंटरेस्टिंग है, मकान मालिक डरा हुआ कि भैया मेरे पे इल्जाम आ जाएगा, तो उसको बना देते कैरेक्टर, उसके इर्द गिर्द कहानी बन देते कि उसकी फटी पड़ी, भाई अब मैं क्या करूं, ये भगवान ये क्या हो गया मेरे बिल्डिंग में, मैंने तो सब कुछ किया था, मैंने तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी देखा था, सब कुछ किया था, उसके अंदर वो सब चीजें चल रही है, मतलब वो उसको कैरेक्टर बना सकते थे, है ना? सो आइडिया क्या है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज you have to be very careful when you're reading a question.
क्वेश्चन को ध्यान से ठंडे दिमाग से पढ़ना जरूरी है। अगर वो तुमने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया या क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, और जो मैं देख रहा हूँ अमूमन हर कोई वो गलती करा है यहाँ पे, इक्का दुक्का छोड़ करके, कि क्वेश्चन को सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं ना, है ना। अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हो तो तुम क्या जवाब दे रहे हो, मतलब कुछ और ही जवाब दे रहे हो, तो इररिलेवेंट है फिर तो। एग्जामिनर बोले क्या लिख रहे हो भाई, ये पूछे नहीं गया तुमसे, क्यों लिख रहे हो, एंड सीधा क्रॉस। सो you can't afford to, you have to be very very careful with these things. पीस ऑफ माइंड होना जरूरी है जब तुम एग्जाम दे रहे हो। ठंडे दिमाग से सही सही सवाल पढ़ोगे, फिर ना सवाल को सही समझ पाओगे क्या पूछे, नहीं तो फिर बहुत बौखलाहट में ना गड़बड़ हो जाए। So you have to be very careful about these things. तो ये वही है, इसमें मैं क्या बोलूँ, इस कहानी में कुछ कहानी ही नहीं है, ये तो डिस्क्रिप्शन है एक स्पेस का ना जहाँ पे आग लगी है, इसमें कहानी का है, कहानी है ही नहीं कुछ। सो कुछ सवाल है तो पूछो। No, sir. Thank you. Okay. So Naresh, sir, should we then wrap it up for today? We can wrap up for today. We are done, and I think it was interesting feedback, and those who attempted, they would have been benefited. Those who could not, we can't do anything. And it is not that you listen to your work only. Okay. If you listen to other people's work only, then you will also get benefited. So ऐसा नहीं कि मेरा तो हो गया बस, तो अब तो अपना चलो घर में घूमने, खाना वाना खाते हैं, मम्मी ने बना रखे होंगे आलू के पराठे। तो wait for other people's work also, because you will learn from other people's mistake. Okay, you learn from your mistake as well as you learn from other people's mistake. That's what it is all about. So it is all about practice on a situation, and somebody can give you a feedback, irrespective of the fact nobody is a favorite and nobody has a ill will feeling against anybody. Yeah, and do the things and you'll get the. I have one point, sir. Yeah, I have to make one point. I feel very compelled. Yeah. ये जो बाकी इतने लोग बैठे ना, प्रखर है, अद्रिजा है, और एक दो है ना, तुम्हें भी करना चाहिए ये। तुम करोगे नहीं तो तुम्हें नहीं समझ में आएगी हम क्या बात कर, वो क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या सिचुएशंस, वो हर्डल्स क्या क्या आते हैं ना, व्हेन यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन। You should attempt those questions, and then just sitting here and trying to listen to what others have done is not fulfilling, enough. So it's not going to serve the purpose. You're not learning much until you jump into the thing and figure out for yourself. Make mistakes. Making a mistake is not a problem. यहीं पे mistake कर सकते हो, वहाँ एग्जाम में नहीं कर सकते हो, यहाँ कर लो। अभिनव, ये भी एक तरीके से अच्छा है कि मान लो 40 के 40 लोग लिख के भेज देंगे तो हम लोग तो कमेंट ही नहीं दे पाएंगे 40 पे भी। इफ यू लुक फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज ऑल्सो गुड कि 10 से 15 लोग या 7 लोग या 8 लोग लिख रहे हैं, 10 लोग लिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम लोग अपना कम से कम कमेंट तो कर पाते हैं। और अब 40 लोग लिख देंगे तो फिर हमें वो 2 दिन तो उसी को ही करना पड़ेगा, एक ही आदमी का, एक ही क्वेश्चन को लेकर। तो इट इज गुड इन सम वे कि अदर पीपल आर स्लीपिंग, लेट देम स्लीप। Yeah, but they're losing. So I feel bad कि यार you guys are losing somewhere, वो तो देखो क्या है, रेशो वही होता है। रेशो जो है वही होता है कि जो गिने चुने लोग होते हैं वही खेल कर पाते हैं, क्योंकि सीट 10 है वहां तो, और 35 लोगों को बुलाया जाता है। बहुत सीधा सा खेल है। तो 35 लोगों को बुलाया जाता है और यहाँ 15 लोग लिख के भेज रहे हैं, और हमारे पास कुल 40 लोग रजिस्टर्ड है। सो इट्स अ गुड रेशो। 40 में से 15 पीपल आर अटेम्प्टिंग, इज अ गुड रेशो, एज सिंपल एज। हाँ बोलो एकाग्र सिंगल। Sir, wanted to ask, like, do we have any idea if the exam, like, when is the exam gonna happen? अगर कल एग्जाम हो जाएगा तो तुम पास हो जाओगे, मेरा क्वेश्चन ये है। I'll try my best, sir. तो ट्राई वराई का कोई मतलब नहीं होता है। एग्जाम कब होगा उसको तुम भूल जाओ, तुम्हारी तैयारी है या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन मुझसे 50 लोग मेल करके डेली पूछते हैं। नहीं, एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब वो एग्जाम कब होगा भूल जाओ, उसको भूल जाओ कब होगा एग्जाम। भाई पिछले साल जो है दिसंबर में हुआ 18-19, उससे पहले फरवरी में होता था, तो दिसंबर और फरवरी के बीच में कभी भी हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने प्रिपरेशन किया हुआ है? तुम उस चीज के बारे में तो चिंता नहीं कर रहे हो, ये बकवास वाला क्वेश्चन पूछने में लगे हुए, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो तुम तैयारी करो,
ये सोच के कि 18-19 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद जनवरी में हो, फरवरी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड सर। पूछ लिया ब्रह्म ज्ञान का क्वेश्चन, किसी और ने कोई ब्रह्म ज्ञान पूछना है? ठीक है, ओके डियर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Take care. Have fun. Bye.